कांग्रेस पार्टी की मोहरा है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक दल है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, सब खामियों को दूर करेंगे। विपक्ष का एक विपक्ष विरोध जो है बयानबाजी यही है, सब कुछ ठीक है और हम लोग विकास के पथ पर जा रहे हैं। You're watching the News Hour at 9, debate number 2 on Times Now, Super Prime Time. Joining me on the debate in Uttar Pradesh, what's the war all about? Karan Verma, author, Harshvardhan Tripathi, senior journalist, Vivek Silas continues to be with us, Sanjay Jha is with us. But first, my question goes to Sabha Naqvi, senior journalist. Sabha, you've covered Uttar Pradesh on many occasions. What do you think is going on in Uttar Pradesh? Certainly, the BJP's statements that all is well is not something anybody is believing at face value. But chal kya raha hai? Navika, first of all, there is a shock. What went wrong? Of course, that is there. It is also trying to deflect blame. It's happening across the party. It's normal also. I wouldn't say that it is uniquely BJP, but it is for those who have not seen the earlier BJP. It is a shock because the Modi BJP appeared to be a very obedient party. This has been a very big reversal in Uttar Pradesh. And let's remember that UP was actually fully conquered only with Narendra Modi's shift to Delhi. Before that, BJP was present, but it was SP, BSP were the dominant parties. So as we see that the Prime Minister, that single party era has ended, the BJP's hegemony over UP now. But what I think will happen is that the responsibility has been given to Yogi Adityanath to handle the 10 by-elections. Now, he does have control over the state government. He's going to do everything that he possibly can. It will be a test case. The by-elections, even though five of the seats are held by the Sapa, it is a test case to see whether the vote was the people teaching a lesson, कि आपका अहंकार बहुत बढ़ गया है, you are mounting such an expensive campaign, all of this, हमारे पास नौकरी नहीं है, संविधान बदलेंगे, ये सब चीजें. Whether it's going to be a test case or can there be a return of the sort of vote on Hindutva? They have lost a lot of their Dalit voters, no doubt. But can there be some return? It is a test case for Adityanath Yogi. Till then, everybody will behave better, according to my understanding. They will all be behaving better. Harshvardhan Tripathi, right now they're not. Harshvardhan Tripathi जी, योगी जी की मीटिंग में डेप्यूटीज नहीं जा रहे, स्टेट के अध्यक्ष नहीं जा रहे. मैसेज बहुत बुरा चल रहा है, लेकिन अब जब तारीख आ जाएगी बाय इलेक्शन का पास चॉइस क्या है? ओके, बट आज जिस तरह से चीजें लग रही हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, 1 मिनट सभा, 1 मिनट, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है, चल क्या रहा है? To say that Yogi ji will do this for 10 seats, is this only about 10 seats, number one? और number two, ये जो रोज रोज फला नहीं गया, और अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य मोहरा है, पासवर्ड दिल्ली में है, इसका क्या मतलब, ये चल क्या रहा है? और क्या बीजेपी 240 पाने के बाद, सरकार बनाने के बाद भी कहीं ना कहीं रैटल्ड, बिखरी हुई नजर आ रही है? और सभा जी कह रही है कि ये धक्का लगा, पर 45 डेज हो गए, अब धक्का पीछे करिए, आगे बढ़िए. क्या बीजेपी इज नॉट एबल टू गेट इट्स एक्ट टुगेदर? नविका जी, 240 सीट्स का मसला नहीं है. मसला उत्तर प्रदेश की 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के जीत का है, और यहां निश्चित तौर पर धक्का लगा है. अब किसी न किसी को तो इसका ओनस लेना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी. भारतीय जनता पार्टी में एक जिसको कहते हैं ना कि जो फीडबैक सिस्टम है, उन्होंने इतने दिनों में लगातार बैठकें की, लगातार स्टेट एग्जीक्यूटिव हो गई, लगातार उनके नेता मिल लिए. नड्डा जी लखनऊ आ गए, दोनों जो नेता हैं वो दिल्ली आ गए, योगी आदित्यनाथ भी हैं 2 दिन, वो भी मिलेंगे. और जो अभी जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं, इन दिनों में भी देश भर के संगठन मंत्रियों की बैठक दिल्ली में चल रही है. ये भी हमें समझना होगा कि बीजेपी की बहुत सी खबरें जो बाहर नहीं आती हैं, और संगठन मंत्री मतलब वो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से होल टाइमर के तौर पर, पूर्णकालिक के तौर पर होते हैं.
अब सवाल यह है कि ये जो यूपी में दिख रहा है कि चीफ मिनिस्टर की बैठक में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नहीं आ रहे, तो सबसे पहले तो ये कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स का ये कहना है कि वो विधायक के तौर पर क्यों जाएंगे, उनको खुद की इंसल्ट लगती है उस तरह से जाना। और जब वो कैबिनेट में नहीं जाते हैं तो एक तरह से चीफ मिनिस्टर का एक अवमानना है, एक उनका सम्मान न करना है। दरअसल पूरी बीजेपी में इस वक्त जो मुश्किल है कि कोई भी इसको पचा नहीं पा रहा और हर कोई दूसरे के सर पर नारियल फोड़ देना चाहता है, जिम्मेदारी का नारियल दूसरे के सर पर फोड़ देना चाहता है। लेकिन एक बात बहुत क्लैरिटी के साथ समझनी चाहिए, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं और आगे भी बने रहेंगे, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। केशव प्रसाद मौर्य उस वक्त अध्यक्ष थे, 17 से अब 24 आ गया, और केशव जी भी, अगर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के जिम्मेदार हैं कि 33 सीटें रह गई, तो केशव प्रसाद मौर्य ने ही कौन सी अपने आसपास की सीटें जिता दी, उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होगा। तो मुझे लगता है कि एक सामूहिक जिम्मेदारी का मसला है और ये तय होगा अगले 2 दिनों में, और 2 दिन तो सीधे सीधे नहीं होंगे, अगले 10 दिनों में लगातार बैठ के है, लगातार मीटिंग होनी है, उसमें यह तय होना है। उसके बीच में केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक अपनी रेलिवेंसी खोज रहे हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के तौर पर न तो वो उस तरह से अधिकार युक्त है, न वो काम करते दिख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से कमांड में है और नरेंद्र मोदी का पूरी तरह से उनके ऊपर वरद हस्त है, इसमें मुझे जरा सा भी संदेह नहीं दिखता है। विवेक साइलस, तो इसमें पासवर्ड की चिंता समाजवादी पार्टी को क्यों हो रही है? नहीं, देखिए, पासवर्ड तो कहीं ना कहीं वो है ही है, क्योंकि अगर आप देखिए 2022 का चुनाव केशव प्रसाद मौर्य खुद भी हार गए थे। विधानसभा में बात तो कर रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं, और हमारी एक छोटी सी कार्यकर्ता पल्लवी पटेल ने उनको हरा दिया था, वो भी 27,000 वोटों से, बुरी तरह से हार के आए थे, लेकिन फिर भी उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कहीं ना कहीं वो तो मोहरा और पासवर्ड दोनों स्पष्ट है, इसमें तो कुछ सोचने वाली बात नहीं है। इंडिया अलायंस का पासवर्ड तो चेक कर लीजिए कहाँ है, क्योंकि इंडिया अलायंस इस समय सरकार में नहीं है, जब सरकार में आएगा तो हम पासवर्ड भी चेक कर देंगे, आपको बता देंगे। तो संजय झा, इंडिया अलायंस अपना पासवर्ड तो तय नहीं कर पा रहा। You don't want Mamata Banerjee to attend. You don't want, but Mamata, Hemant Soren, everybody is coming for the Niti Aayog meeting. Mamata Banerjee is on record and saying that there is no coordination in the India Alliance. By the time I was told that don't go for the Niti Aayog meeting, my speech had already been sent. So you are finding trouble in the BJP when your own house is not in order. Clearly, fishing in troubled waters, पहले अपना घर तो सीधा कर लीजिए। I think this is a very valid question, Navika, and I'll be very honest with you. No schadenfreude from my side. No gloating. The BJP's internal problem. They were expecting to do well. They haven't done well. As somebody who's been part of the Congress, etc., I can tell you that when a party doesn't do well, there is a lot of, as I think Tripathi ji rightly mentioned, there is a lot of apportioning of blame to somebody else. There is all a fall guy. You always want to hang somebody else by the tallest tree with the thinnest thread. But here is the point. I think where Mr. Adityanath is concerned, I'm a big critic of his politics and some of his recent decisions. But from what I get the feedback from my, people whom I know in Uttar Pradesh, he's an extremely popular leader. Now, I think don't discount what Arvind Kejriwal said during the time of the election campaign. People thought he was just indulging in hyperbole. But, I have been in politics long enough to tell you that the battle within political parties is sometimes more fascinating than it is between political parties. And there is a lot of contest within. It's very natural. I think it's very human. So, end of day, he's a formidable personality. The bulldozer politics pleases a lot of people in his constituency. I mean, as a secular liberal, I don't like it, but I know there are people who like that kind of politics. So I think there is a worry within the BJP top brass in Delhi. Is this a good time to clip the wings of Mr. Adityanath? I think that is the politics that you're currently playing out. But good luck to them. I think is the opposition, Karan, is the opposition somewhere fancying this idea because they want ke Yogi ke wings clip ho jaye because he's just so popular. The worst kept secret came out of Sanjay Jha's mouth. He is so popular. His bulldozer Baba, his overall Hindutva image, and his administrator skills have caught the fancy of an electorate. Do you think it's wishful thinking on part of the opposition? But on the other hand, does the BJP need to get its house in order sooner than later?
Navika ji, Yogi Adityanath is the first CM in 37 years to be elected again. So yes, of course, not only is he popular, let's not lose sight of the fact that BJP in the last 10 years, nobody could have fathomed the kind of rise BJP has had in Uttar Pradesh. Successive victories, election after elections. This time, of course, they've taken a beating by 27 seats. But this is what introspection looks like. I mean, unlike the Congress party where the AK Antony report was biting dust for 10 years, nobody had any accountability. This is a party that believes in accountability. And this is what accountability looks like. This is what a churn looks like. So, you know, it's pretty normal what is happening within the BJP. Of course, there are voices of dissent. And Sabha rightly said that it is normal. But it's become such a rarity that it doesn't seem normal to other political parties because barely do they ever sit and think about where they went wrong. And also, you know, Navika ji, when we talk about Yogi Adityanath, he's a man who has also delivered. Remember back in 2020, we saw the same murmurs that there are internal dissensions within the party is not coming together. He weathered that storm and came out on top in 2022. Not only that, he's taken UP to great heights. From 7th largest economy, it is the 2nd largest economy today. Well, one upset in a result can often make a party look that as if it's in complete disarray, but the BJP has always prided itself in being a party with a difference. Can they sort out their differences and get on with the show on the road? Because there are elections coming up, 3 states going to the polls sooner than later, apart from the 10 seats in by-polls in Uttar Pradesh itself. As of now, of course, opponents are having a field day, but the BJP, वो कहते हैं ना, इन्होंने कभी कच्ची गोलियां नहीं खेली, तो क्या बीजेपी अपनी कच्ची गोलियों को जल्दी पका लेगी और अपना पूरा संगठन और पार्टी साथ कर लेगी? All eyes on that. Thank you very much to all my panelists for joining me on this big debate. Thank you for being with me on the News Hour, viewers. Good night, be safe, and I'll be back on Monday at 9 p.m. with the News Hour.